गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। सो गाइस, आज इस सेशन में मैं कुछ करवाने वाला हूँ क्वेश्चंस जो एक्चुअल कैट पेपर से हैं, प्रीवियस ईयर कैट के, कैट 2017, 19 एंड 18 के हैं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी इस टॉपिक पे जो कैट में आए हुए हैं। तो दिस इज द प्रैक्टिस सेशन जिसमें हम हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स, मैंने कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहाँ पे include किए हैं. So today's session will be questions will be moderate level of difficulty of the questions will be from moderate to high, you can say. So let's begin. Those who are watching me for the first time, yes, my name is Shyam Jagrut and I have been training the student for last 8 years for CAT, SNAP and other MBA entrance exams, and I have trained more than 7,000 students for MBA entrance exams. So I do teach the students for quantitative ability, logical reasoning and डेटा इंटरप्रिटेशन। तो गाइस, आज का एजेंडा सिंपल है। हमें कैट के लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, लास्ट 3 इयर्स में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी पे, वो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू मोर, प्रैक्टिस फ्यू मोर क्वेश्चंस which are of a bit higher level of difficulty from this topic. Counting principle, permutation, combination, probability सारे mixed रहेगा आज। बहुत ही interesting questions है। Those who are new to our channel, guys, quickly subscribe to this channel, Unacademy CAT4MBA. You can also join us on Telegram. CAT4MBA is our Telegram group, Telegram channel, where you'll be getting the PDF material for each and every session that we conduct on YouTube as well as on Unacademy platform. So guys, जो लोग new है, they can quickly go to Play Store and you can quickly download the app, that is Unacademy learning app. You can search for Unacademy learning app, download and install it. तो यहाँ पे क्या होगा गाइज, जो स्पेशल सेशंस हैं वो तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करते आएंगे. यू कैन अटेंड ऑल द स्पेशल सेशंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया and you will be able to directly interact with us on this platform. So quickly go to Play Store, download and install the app. So these are the steps to install it. You can select your course as goal as CAT and get the subscription. So if you take the plus subscription, there are many advantages, like you'll be getting the mock test and complete support for your preparation. तो अगर तुम्हें प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, सो दीज आर फ्यू प्लान्स फ्रॉम अनअकैडमी, अमेजिंग प्लान्स यू कैन से, where you'll get the complete support for your preparation. So highly recommended plan. I'll recommend to go for 1 year or 2 year plan. Those who are planning to go for planning to write next year they can go for the 2-year plan. And you can also avail 10% of discount just by using the code SHAM1. So whosoever is willing to go for this subscription, do not forget to use this code SHAM1 to avail 10% of the discount. So let's begin. Okay, so here is the first question from CAT 2018. I want all of you to try this question at your own. So whenever I move to the next question, it's your duty to tackle that question within a minute. At least read it so that when I explain, it will be easy for you to comprehend, easy for you to understand the explanation. Try to comprehend the information properly and try to get the answer. Really, it's an easy question. Okay, so in a tournament, there are 43 junior level and 51 senior level participants. Each pair of the juniors play one match for 43 juniors. तो कितने मैचेस होंगे? 43C2. The number of ways we can select the two persons out of 43.
is 43 C2. Seniors उनके आपस में मैचेस होंगे 51 C2, बट इट्स नॉट नेसेसरी. ये हमें पूछा भी है या नहीं पूछा है, दैट विल talk about it later, because उससे क्या पता चलेगा टोटल जूनियर्स के कितने मैचेस हुए, टोटल सीनियर्स के कितने मैचेस हुए, राइट. then each pair of seniors play one match and there is no junior versus senior match. मतलब ये ग्रुप के स्टूडेंट्स इस ग्रुप के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे, ये अपने विद इन द ग्रुप मैच चलेंगे, जूनियर्स के साथ एंड सीनियर्स के साथ. देन द नंबर ऑफ गर्ल्स वर्सेस girl match in junior level is 153. Now we don't know the number of girls here, so let's say out of this 43 there are x girls. So can I say x C2 has to be equal to 153, right? If we solve this, x into x minus 1 upon 2 into 1 has to be equal to 153. You can simply double it and find the numbers which are consecutive multiples. x into x minus 1, it has to be 153 का double होगा 306. Now how to get the answer? Listen, one way you can go for solving the quadratic equation, but I can simply tell you x and x minus 1 are two consecutive numbers. x बड़ा रहेगा, x minus 1 छोटा रहेगा. So to get the consecutive numbers, the trick is, tell me 306 कौन से दो perfect square numbers के बीच में आता है guys? 17 square is 289 and 18 square is 324. So definitely x का value 18 होगा and 18 minus 1 17 होगा. So x has to be 18. That's the trick to calculate that I can share with you. Otherwise तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये solve करना पड़ेगा. So what we have got up till now, out of this 43 juniors में से girls कितने हैं? There are 18 girls. So definitely boys कितने होंगे? 25 boys. The same way we'll do it for seniors. Seniors में boys versus boys match जो है, seniors में we don't know the number of boys and number of girls. So let's say B is the number of boys in seniors. So BC2 has to be equal to 276. We'll get the same calculation, or simply say this is y. So YC2 y into y minus 1 has to be equal to twice of 276. Twice of 276 will be 552, right? So 552 कौन से दो स्क्वायर्स के बीच में आता है? 23 square and 24 square. So y has to be equal to 24. So hopefully you understood that trick. Otherwise फिर तुम quadratic equation से solve करो, you'll get the value of y as 24. So we have got number of boys in seniors is 24 and number of girls in seniors, total seniors कितने हैं? 51 seniors है. 51 में से 24 boys हैं, तो girls कितने होने चाहिए? 27. Now we are supposed to calculate the number of matches a boy plays against a girl. देखो यहाँ पे 18 गर्ल्स है, तो यहाँ पे हर एक बॉय गर्ल के अगेंस्ट कितने मैचेस खेलेगा? 18. So the number of matches a boy will play against girls will be 25 into 18, and here each boy will play 27 match with against every girl. A boy will be playing against every girl. So there are 24 boys. So how many matches will be there? 24 into 27. So if we calculate this, this will be 50 into 9, 450. 18 5 is 90 होता है, 90 into 5 will be, right. Then 24 into 27, if you do this calculation part, 7 4 is 28, carry 2, 14 plus 8,
24, 22, 648. So you'll be getting the final answer as 600 and 400 will be 1000 and 98, 109. It was a teacher question, but in my opinion this is not a tough question at all. We do have a structured way to solve this question. It's like handshakes, right? Tournament bolo tum handshakes bolo. Simply you can remember this shortcut. We use the combination when there is when the sequence doesn't matter. So hopefully all of you understood. Let's move to the next question. That is, we do have the next one from CAT 2017. CAT 2017 में काफ़ी सारे permutation, combination and probability पे question आए थे. You have next 5 questions from CAT 2017. Let's go for it. The number of solutions XYZ, it's nothing to do with the permutation and combination. It is just simple counting principle पे question you can say. That's why I included this question in this topic. We are going to count the number of solutions. Okay, so simple counting will be using. Manually we need to count. We need to get x minus y minus z has to be equal to 25. That simply I can write it as x minus ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं y plus z has to be equal to 25, राइट? चलो अभी ट्राई करते हैं कि x का वैल्यू तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 40. तो अगर x 40 है तो y का वैल्यू कितना होगा 15 होगा, तभी ये 25 आएगा. सॉरी नॉट y plus z, this combined value will be 15. अदर पॉसिबिलिटी 39 और यहाँ पे मैं लेता हूँ 14, और we can have 38 and 13, 37 and 12, we can have 36 and 11, 35, 10, 34, 9, 33, 8, 32, 7. Then we need not to write all this, means सारे लिखने की जरूरत नहीं है सच, बट कहाँ तक जाएगा 1 तक जाएगा या 2 तक जाएगा, बिकॉज y plus z के हमेशा are positive numbers. Positive numbers means they cannot be 0. y and z minimum कितना होगा 1 plus 1, तो 2 तक जाएगा. We can have 30 and 5, then 29 and 4, we can have 28 or 27. These many possible ways. Need not to write all these things, but मैंने just to understand it in better way, इसलिए मैंने सारे possibilities. Now ये तो हुए x and y z का combination. Now y plus z 15 कैसे हो सकता है? How can we get y plus z 15? Y plus z must be equal to 15. How many possibilities are there? But y cannot be greater than 12. Y can maximum be 12, 3. Don't start with 14, 1, because 14 तो हो ही नहीं सकता है, right? 12 तक हो सकता है. तो y के वैल्यू में 11, 12 ऐसे रख सकता हूँ. Till what? और 1 तक भी नहीं जाएगा. सुनो ये बहुत केयरफुली करो, बिकॉज यहाँ पे गड़बड़ होने का चांस है. तो 12, 3 हो सकता है. 1 तक नहीं जाएगा, वापस सिर्फ कहाँ तक जाएगा 3 and 12 तक ही जा सकता है, राइट? तो 3 to 12 and 3 to 12 मैक्सिमम ये 12 तक जा सकता है. यहाँ पे 4, 10 के साथ 5 and so on. So from starting from 3 to 12, how many choices do we have? Just 10. तो इसके साथ हमें 10 solutions मिलेंगे. Now look at this. y plus z हमें 14 चाहिए,
y प्लस जेड 14 होना चाहिए। तो कितने सॉल्यूशंस मिल सकते हैं? 12 एंड 2, देन 11 एंड 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? 2 एंड 12 तक जा सकते हैं, 2 एंड 12। So how many solution can we have here? 11. Okay, 11 solutions, right? Then 13 के लिए y 13 होना चाहिए। तो 12 एंड 13 y plus z must be 13। तो 1 12 2 11 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? 12 एंड 1 तक जाएगा। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 12 सॉल्यूशन। आफ्टर दैट ये जो भी रहेगा ना, ये कितने सॉल्यूशंस आएंगे? y प्लस जेड 12। तो सॉल्यूशंस कितने आएंगे? y प्लस जेड अगर 12 लेना है ना, आगे सिमिलर चलेगा। y प्लस जेड अगर 12 चाहिए तो इट कैन बी जस्ट 1 प्लस 11 देन 2 प्लस 10। एक कम आएगा, मीन्स बेसिकली 11 सॉल्यूशंस आएंगे, 11 एंड 1 तक जाएगा। तो ये जो 12 है इसके लिए 11 सॉल्यूशंस आएंगे। जो 11 है y प्लस जेड 11 जहाँ पे चाहिए वहाँ पे हमें 10 सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये सीक्वेंस में चलेगा। देखो यहाँ पे हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस, यहाँ पे 4 5 6 will be 7 will be 8। इसलिए ये सारे लिखने की जरूरत नहीं थी। तो हमें कहाँ तक ऐड करना है? टिल 11 सीक्वेंस में है, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन टिल 11। 11 होने के बाद 11 तक एडिशन होने के बाद ये ऊपर का, सो 1 to 11 if we add this, write the remaining part here, 1 plus 2 plus 3 up to 11 प्लस ये कितने हैं? 10 11 एंड 12 इज 30। तो हमारा एडिशन कितना आएगा? 1 to 11 तक का एडिशन आता है 11 into 12 डिवाइड बाई 2 प्लस 33। दिस हैज टू बी 66 प्लस 33 will be 99। So let's speed up guys, that was an easy question again, but थोड़ा सा ये मैन्युअली करने की जरूरत है। and this is what CAT is all about। most of the time तुम्हें possibilities लेते आने चाहिए और काफी सारे questions तुम्हारे ऐसे ही solve हो जाए। so really important counting related question। let's move to the next one। try this one। this is again a simple conceptual question, you can say A, B, C, D, E, F, G, H and J, K be 5 diameters of the circle. Need not to draw the diagram actually. With the center O, in how many ways can 3 points be chosen so as to form a triangle? Is as simple as यहाँ पे 5 diameters हैं तो उनके end points कितने होंगे? 10 end points हमें मिलेंगे। राइट एंड एक सेंटर है। तो इन हाउ मेनी वेज, जितने वेज में हम 3 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, टोटल 11 पॉइंट है, तो हमें क्या करना चाहिए? 11C3। बट द प्रॉब्लम इज अगर मैं ये डायमीटर के बीच में ये तो लाइन बन रहा है, सो दिस इज नॉट अ ट्राइंगल, दिस इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज नॉट अ ट्राइंगल, नॉट अ ट्राइंगल। जो डायमीटर है ये तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं, राइट। सो ये 5 मुझे माइनस करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट्स इट। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? 11C3 माइनस 5, बिकॉज वो तो स्ट्रेट लाइन बनेगा जब ये पास होंगे 2 पॉइंट। डायमीटर जब तुम कनेक्ट करोगे तो सेंटर विल बी इन द स्ट्रेट लाइन। तो 11 into 10
into 9 upon 3 into 2 into 1 minus 5. So if you know the concept, that's the easiest question you can have. 15 into 11, it will be 165 minus 5. Answer was 160. The easiest question you can expect in CAT exam, and really important. और ये सारे questions आए हुए हैं, so definitely you'll get fair idea about the CAT paper और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. नॉट अबाउट दिस टॉपिक ओनली, ऐसे ही कुछ थोड़े तुम्हें सोचना पड़े ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. राइट, द ओनली थिंग इज ट्रायंगल अगर नॉर्मली नॉन कोलिनियर पॉइंट रहते 11 के 11 तो 11 C3 आंसर होता, बट दीज 5 कॉम्बिनेशंस विल बी इन द straight line, the 5 diameters. One diameter will have 3 points, endpoints, and a center lying in a straight line, so that won't form a triangle. So 11C3 minus 5. Easy. Let's move to the next one. In how many ways can 7 identical erasers be distributed among the 4 kids in such a way that each kid gets at least 1 eraser but nobody gets more than 3 erasers? ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था. सुनो, more than 3 erasers मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए ये कंडीशन हटा देते हैं. Let's say this is not the condition given in the question. Okay, so we do have 7 erasers. I'll represent 7 erasers by 7 sticks. 1 2 3 4 5 6 and 7. So how many gaps will be having in between? We'll be having 6 gaps, right? Now हमें इसको 4 kids में divide करना है, तो can I say मैं यहाँ पे 3 प्लस साइन डाल दूंगा. प्लस साइन मतलब क्या, देखो एक प्लस साइन डालूंगा तो इसके 2 पार्ट होंगे, 2 प्लस साइन डालेंगे तो इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, 1 1 and this will be 5, right? Anywhere you can put this plus sign anywhere. अगर मैं यहाँ पे प्लस साइन रखता हूँ तो this will be 1 2 and 4. ये 3 पार्ट हो रहे हैं. So we need to do divide it in 4 parts, that is 4 kids distribution. तो हमें कितने प्लस साइंस लगेंगे यहाँ पे? मिनिमम 3 प्लस साइंस लगेंगे. अगर मैं 3 प्लस साइन डालता हूँ तो देखो 1 1 1 and 4. अगर मैं ये प्लस साइन यहाँ से हटा के यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ तो क्या बनेंगे, कौन से ग्रुप बनेंगे? 1 2 2, राइट? हो रहे ये बराबर 4 पार्ट. तो बेसिकली आई नीड टू अंडरस्टैंड इन हाउ मेनी वेज कैन आई पुट दीज 3 प्लस साइंस आउट in the 6 places we do have, the 6 gaps we have. तो कितने वेज में हो सकता है ये? 6C3, और 6C3 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 into 1, तो आंसर has to be 20. बट द प्रॉब्लम इज, सुनो मैंने ये कंडीशन यहाँ से हटा दिया था, 20 आंसर नहीं है. अब एक चीज क्लियर होती है, तो 20 तो टोटल है, राइट? हमारे क्वेश्चन में ये कंडीशन भी दिया है, नो वन गेट्स मोर देन 3 इरेजर्स. किसी को भी 3 इरेजर्स से ज्यादा मिलती नहीं है. अब एक चीज समझ, 3 से ज्यादा मतलब कितने? 4 इरेजर्स. एंड ईच किड गेट्स एटलीस्ट 1, मतलब ऐसे हो सकता है 1 1 1 and 4. अब ये 4 इरेजर लास्ट किड को मिल सकते हैं, या फिर 4 1 1 1 ऐसे हो सकता है. 4 सेकेंड को मिला ये 1 1 1, और 4 फर्स्ट को मिले ये 1 1 1. ये हमें चलेंगे नहीं. तो ये कितने पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3 and 4. ये छोड़ के बाकी सब चलेंगे. मोर देन 3 नहीं हो सकता है, 3 हो सकता है. क्लियर? किसी को 4 नहीं मिल सकते. तो योर आंसर मस्ट बी 20 minus 4. इट हैज टू बी 16. डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, बट रियली इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट.
Hopefully all of you understood. All these questions are quite interesting. Hopefully you're getting this really important question type जो आज हम cover कर रहे हैं. Let's move to the next question. Try this. Again a question from CAT 2017. In how many ways can 8 identical panes be distributed among A, B and K? I'll just call it as Amal, Bimal and Kamal की जगह मैं लिख रहा हूँ A, B, K. So that Amal gets at least 1 pane and Bimal gets at least 2 panes and Kamal gets at least 3 panes. देखो गाइस ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं कैट में तो डेफिनेटली तुम्हें ये ट्राई करते आने चाहिए एंड ये 100% एक्यूरेसी के साथ तुम्हारा आना चाहिए, करेक्ट आंसर मिलना ही चाहिए इसका. बिकॉज लुक एट द वैल्यू, दैट्स रियली अ सिंपल वैल्यू यू कैन हैव. ए, बी एंड के में मुझे 8 चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है so that ए को कम से कम 1 मिलना चाहिए, बी को कम से कम 2 मिलने चाहिए, कम से कम 2, एंड सी को सॉरी के को कम से कम 3 मिलने चाहिए. सो 1 2 3 टोटल कितने हो गए? 6. हमारे पास कितने थे? 8 थे. तो एक काम करते हैं, इसको कम से कम 3 देने हैं तो मैं इसको 5 भी तो दे सकता हूँ, राइट? अब देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 1 के साथ अगर मैं ए को 1 दे देता हूँ तो बी प्लस के को मुझे 7 देने चाहिए. अब 7 देने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है? इसको कम से कम 2 तो मिलने चाहिए. 2 एंड 5 भी तुम दे सकते हो. इवन मैं इसको 3 एंड 4 दे सकता था, या फिर मैं 4 एंड 3 दे सकता हूं. देखो इसको कम से कम 2 मिले और इसको कम से कम 3 मिले. अब 3 से नीचे इसको नहीं ले जा सकते हैं, तो 1 के साथ ए को 1 मिला तो इसके साथ तो 3 वेज पॉसिबल है. लुक एट दिस, इतना इजी हो गया. आफ्टर दैट अभी क्या करेंगे, हम ए को 2 देते हैं. ए विल गेट 2 पेन्स. अगर ए को 2 पेन्स देते हैं तो बच जाते हैं 6 पेन्स. 6 में से इसको 2 मिले और इसको 4 मिले, ऐसे हो सकता है. इसको कम से कम 2 मिलने चाहिए. देन इसको 3 और इसको 3 मिले, ऐसे भी चलेगा. तो इसको अभी तुम 4 और 2 लोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि के को कम से कम 3 मिलने चाहिए. तो 3 3 दे सकते हो तुम ज़्यादा ज़्यादा यहाँ. तो 2 के साथ हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज बने? जस्ट 2 मोर पॉसिबिलिटीज. एंड वी कैन हैव, अगर मैं ए को ही 3 पेन्स दे देता हूँ तो बच जाते कितने पेन्स है? 5. 5 में से कम 2 इसको देने हैं एंड कम से कम 3 के को देने हैं. दैट्स द ओनली वन पॉसिबिलिटी वी कैन हैव. अब इसको 4 दिए तो फिर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 और 3 टोटल, इधर तो 5 होनी चाहिए. सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज वी आर गेटिंग? 1 2 3 4 5 6. इट शुड नॉट टेक मोर देन अ मिनट इन एग्जाम टू सॉल्व. और डेफिनेटली ये करेक्ट आंसर आना चाहिए विदाउट एनी सिंगल सेकेंड थॉट. डू नॉट मिस ऑन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. और ये हर साल के कैट में तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन. नॉट एग्जैक्टली सेम, कैट में कभी सेम क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तुम्हें डेफिनेटली, बट द लॉजिक एंड अप्रोच रिमेन्स द सेम. दैट्स व्हाट आई कैन से. Okay, so let's go ahead and practice few more questions. Again a question from CAT 2017. How many 4-digit numbers which are divisible by 6 can be formed using the digits 0 2 3 4 6 such that no digits used more than once, means repetition is not allowed and 0 does not occur in the leftmost position. वो देने की जरूरत भी नहीं है, अदरवाइज हमें क्लियरली लिखा हुआ है 4 डिजिट नंबर होना चाहिए. 4 डिजिट नंबर, don't start with 0, that's simple thing, right?
तो लेटमोस्ट पोजीशन पे 0 नहीं आना चाहिए. तो इफ वी ऐड ऑल दीज नंबर्स, 0 देखो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब किससे होना चाहिए, 3 से एंड 2 से. नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 एंड we do have 0 2 3 4 एंड 6. इससे ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस मैं तुम्हें लास्ट सेशन में करवा चुका हूँ एंड ये बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है. देखो 2 + 3 + 4 + 6, ये टोटल एडिशन कितना हो रहा है, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, दैट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 एंड दिस कम्स आउट टू बी 15. so the 15 is divisible by 3. So either we can have number which comprises 3 digits, 2 3 4 6, or we can just exclude 3 and include 0 2 4 6 लेते हैं और उसके साथ 0 लेते हैं, या फिर मैं 6 को एक्सक्लूड कर देता हूँ एंड आई जस्ट टेक 0 2 3 एंड 4. ये टोटल पॉसिबिलिटीज है, तुम ले सकते, राइट. नाउ इफ यू लुक एट दिस पॉसिबिलिटी, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 तो पॉसिबल हो जाएगा अभी. फर्स्ट केस, सेकेंड केस एंड थर्ड केस, ये 3 केसेस अपने को मिले जहाँ पे समेशन ऑफ द डिजिट्स विल बी डिविजिबल बाय 3. ये समझ में आया. After that we'll try to form number which will be divisible by 2, मतलब even numbers हमें बनाने हैं सिर्फ यहाँ पे. तो अगर 2 3 4 6 अगर है और हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, लास्ट डिजिट मस्ट बी even, can have just 2 4 6. how many choices do we have, each choice, then one of the digit will go, either 2 4 or 6 will go. Then for the first place we'll have 3 choice, then for the second place we'll have 2 choice, the next place just 1 choice. तो ये कितने numbers बने. now this is quite important, यहाँ पे 0 आ रहा है, so make sure you are doing it really carefully, okay. 4 digit number, last digit can be 0 2 4 6, but the problem here it will be, अगर मैं यहाँ पे 4 चॉइस दे देता हूँ देन फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, बट यहाँ पे 0 अगर गया होगा लास्ट में तो विल रिमेनिंग विथ 3 चॉइस, एंड अगर 2 4 6 में से कुछ गया होगा तो हमारे पास 2 चॉइस बचेंगे. सो ये हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं. तो व्हाट विल डू, विल फाइंड द नंबर्स एंडिंग विथ 0. टेल मी अ नंबर जिनका लास्ट डिजिट 0 ही होगा, देयर इज ओनली 1 चॉइस एंड द फर्स्ट डिजिट विल हैव these 3 choice, then 2 choice and 1 choice. कितना होगा 6, and other option is last digit can be out of non-zero, that is 2 4 and 6. we do have 3 choice, okay, and 2 4 6 अगर गया तो फर्स्ट डिजिट 0 भी नहीं हो सकता है, और 2 4 6 में से एक चीज जा चुका है, तो यहाँ पे 2 चॉइस बचेंगे एंड दिस विल बी अगेन 2 चॉइस एंड 1 चॉइस. तो होपफुली ये सबको समझ में आता है, ये हमने ऑलरेडी बहुत बार प्रैक्टिस भी किया इससे पहले. तो विल बी 3 4 12, दिस विल बी 18 अगेन. Then go for this last one, 0 2 3 4, 4 digit number ending with 0. number will end with 0. how many numbers are possible ending with 0? so last digit must be 0, then first digit can be anything out of these three choice, ये 6 आ जाएंगे. एंड इफ यू लुक एट द लास्ट एज 3 तो नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी 0 and 3, कैन बी जस्ट 2 and 4. so how many choice,
टू चॉइस और 2 4 में से एक गया. Now first digit cannot be 0. We can have just 2 choice here. वापस से यहाँ पे 2 choice होगा, यहाँ पे 1 will be just 8. So if you add this all these numbers, 8 plus 6, this will be 14 plus 18 plus 3. So final answer must be 18 plus 18 plus 6 plus has to be 50. Easy but not but the thing is you need to be very careful about, अगर तुम थोड़ा भी मिस कर देते हो तो फिर ये गलत होने के चांस है. बट इफ यू आर गुड एट योर बेसिक्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेसिक्स तुम्हें याद है अच्छे से काउंटिंग, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस तुम इजीली मैनेज कर सकते हो विदाउट एनी चांस टू गेट इट रॉन्ग. तो एज कैट इज अ कॉन्सेप्ट ड्रिवन एग्जाम गाइस, तुमने बेसिक्स पे हमेशा वर्क करना चाहिए. कभी भी अपने बेसिक क्लियर रखो तो डेफिनेटली टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें कॉन्ट में हर टॉपिक्स के रिलेटेड ऐसा ही कुछ तुम्हें कैट में मिलेगा. थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, दैट्स इट. दिस इज द सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एज मीन्स यू कैन से एग्जैक्टली द क्वेश्चन टाइप जो तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में प्रैक्टिस करोगे, यू विल डेफिनेटली have the logics. The thing is यहाँ पे divisibility rule by 6 था. 6 के लिए 3 and 2 चाहिए था. तो sum of the digits जो है ये तुम्हें मैन्युअली ये केसेस बनाने हैं. आफ्टर दैट इसको कैसे सॉल्व करना है तुम सब लोगों को आना. दैट्स टिपिकल पीएनसी क्वेश्चंस. काउंट दिस. मेन चीज क्या है, ये 3 केसेस तुम्हें आने चाहिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Okay, so we are done with all the questions from previous year CAT papers जो 17 18 के थे, वही मैंने कवर किए. लास्ट 3 years में इतने क्वेश्चंस आएगा इस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इस टॉपिक पे. यू कैन एक्सपेक्ट 2 questions मैक्स, 2 to 3 questions मैक्सिमम आएंगे. 2 questions तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक पे. एंड रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक टू लर्न. चलो अभी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दूसरे. How many squares are there on the chessboard? This is a simple puzzle. You can say तुम्हें count करना है यहाँ पे, ये squares कैसे count करना है. So I'll tell you one trick here. I'll just disclose the answer. If you have any answer, those who are watching live, they can quickly drop in the comment section, guys. I think this is quite popular puzzle. ये काफी लोगों को पता होता है. So I don't know. You know. लेट्स से अगर मैं स्क्वायर को 2 by 2 में ब्रेक करता हूं तो यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हो गए, 1 2 3 4 एंड ये बिगर स्क्वायर. तो टोटल कितने स्क्वायर हुए, 4 plus 1. क्योंकि जो ओरिजिनल स्क्वायर था पूरा, दैट इज ऑल्सो अ स्क्वायर. वी नीड टू कैलकुलेट ऑल द स्क्वायर्स. ओके, तो ये 4 तो है ही, बट ये चारों को मिला के भी तो एक स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे. तो अगर ये 2 by 2 ग्रिड है तो तुम्हारा आंसर आता है 5. तो होपफुली अंडरस्टूड. ये स्क्वायर्स तुम्हें गिनने हैं 1 2 3 4. ये तो 64 आएंगे ही आएंगे, बट द थिंग इज ये भी एक स्क्वायर है. इट्स क्लबिंग दिस टू, क्लबिंग द 4 स्क्वायर्स. कोई भी तुम ले सकते हो, दूसरे 4 भी ले सकते हो ना. अभी कोई ये भी कह सकता है कि फिर हम 4 ले सकते हो तो मैं 9 भी ले सकता हूँ. This is also a square, 3 by 3. We are supposed to calculate, count all the squares. ये बड़ा स्क्वायर है. So how to count it? The simple logic मैंने ये बताया कि अगर ये 2 by 2 है तो ये 4 plus 1 5 हो गया, राइट. चलो एक काम करते हैं, 3 by 3 के लिए सोच के देखो, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा यहाँ से डेफिनेटली. That's the logic. चलो क्योंकि ये तो 8 by 8 ग्रिड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़े स्मॉलर ग्रिड्स ट्राई कर रहा हूँ. यहाँ पे कितने दिख रहे हैं तुम्हें, 9 स्मॉलर हो गए. देन आफ्टर दैट 1 2 3 and 4 प्लस एक बड़ा वाला.
So hopefully you understood 9 plus 4 plus 1 is 3, 40. Can you think of what is the answer? देखो अगर मैं 4/4 ग्रिड ट्राई करूंगा, 4/4 स्मॉल कितने हैं 16, उसके बाद अगर तुम बड़े काउंट करने जाओगे ना, ये 4/4 वाले 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड 3, तो ये 3/3 का ग्रिड बनेगा। ये 9 आएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर 1 आएगा। So I don't know how many of you have observed this. Okay, I'll tell you the logic. क्या शॉर्टकट है यहाँ पे? This is 1 square plus 2 square. जब ये 3/3 ग्रिड रहता है तो इसका आंसर होता है 1 square plus 2 square plus 3 square. अगर ये 4/4 ग्रिड है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाता है 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square. तो होपफुली यू अंडरस्टूड। इसके लिए आंसर कितना आएगा 1 square plus 2 square plus 3 square plus and so on till 8 square. अब एडिशन के लिए एक फॉर्मूला भी है यहाँ पे, 1 square plus 2 square plus 3 square plus and so on up to n square. This is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. If you can remember this formula, you can do that. Otherwise तुम्हें manually add करना, but 8 तक add करना manually भी possible, it's not a big deal. So 8 into 9 into 17 divided by 6. 4, 12, 17 has to be 204. You can simply remember the number. Total squares on the chessboard are 204. ओके, तो चेस बोर्ड रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पे, क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ये तो सिंपल हो गया, काउंटिंग द स्क्वायर्स, काउंटिंग द रेक्टेंगल्स, तो सिंपली ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट यू कैन ट्राई दिस, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर ऑन द चेस बोर्ड। अब ये उससे भी ज्यादा आंसर होगा डेफिनेटली, ये 204 तो नहीं होगा एंड 64 भी नहीं होगा, डेफिनेटली इन दोनों में से कुछ आंसर है। रेक्टेंगल्स इन द सेंस, अभी देखो ये दो स्क्वायर भी तुम कंबाइन करोगे तो भी चलेगा, ये चलेंगे। ओके, इवन कोई बोल सकता है ये चारों स्क्वायर अगर मैं लाइन के, ये भी एक रेक्टेंगल है, दिस विल ऑल्सो रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगल, also a rectangle. We can have a lot, too many rectangles. when मैं vertical भी ले सकता हूँ, and every square is also a rectangle. Understand that part? Square भी एक rectangle होता है, square has all the properties of rectangle, so every square is a rectangle. So how many rectangles are there on the chessboard? So I am doing this question including squares, okay, because every square is also a rectangle, so including square हमें calculate करना है। So now this is the question from permutation combination। देखो ये permutation combination पे कैसे डिपेंड करता है, सुनो। अगर एक रेक्टेंगल अगर हमें बनाना है तो कहना है इसे मुझे दो हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए एंड दो वर्टिकल लाइंस होने चाहिए। देखो ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली एग्जैक्टली एक रेक्टेंगल ही बनेगा, देयर इज ओनली वन रेक्टेंगल। जब भी दो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस एंड दो वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, राइट, तो एक रेक्टेंगल बनता है। तो व्हाट वी कैन डू इट हियर, वी कैन जस्ट काउंट द हॉरिजॉन्टल लाइंस। 8 नहीं है, लिसन, 8 हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9।
there are 9 horizontal lines. You understood this? The same way I do have 9 vertical lines. One vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 vertical lines. So we know in how many ways 2 vertical lines and 2 horizontal lines can intersect each other. So in how many ways can I select any 2 horizontal lines? मैं 1 2 select कर सकता हूँ, मैं 1 3 select कर सकता हूँ, 1 4 1 के साथ 9, even मैं 2 3 select कर सकता हूँ, 2 4. So in how many ways can I select 2 things out of 9? It is 9C2 and 2 vertical lines, again it is 9C2. और जितने वेज में तुम 2 vertical lines की पेयर और 2 horizontal lines की पेयर सिलेक्ट कर सकते हो, उतने ही exact number of rectangles बनेंगे. So it is 9 into 4 upon 2 into 1, sorry 9 into 8. So finally it will be 9 into 4, 9 into 8, 2 into 1 has to be 9 4 is 36. So 36 into 36. 36 into 36 will be 100, 1296. That's the answer, including square. अगर ये क्वेश्चन एक्सक्लूडिंग स्क्वायर होता तो, एक्सक्लूडिंग स्क्वायर अगर है तो हम क्या करेंगे, 1296 minus 204 will be 1092. Right? Okay, that's the different thing. It is not here. Including a square ही रहेगा. ये rectangles अगर कुछ लिखा नहीं है तो will include the square. That is 1296. So those who are just joined, guys, highly recommended session. I want the recommendation is you should try each and every question that I am going to teach today. अगर तुमने पहले के क्वेश्चन मिस किए हैं तो डेफिनेटली तुमने ये सेशन कंप्लीट करना चाहिए. And really interesting question. Do not just go through the explanation. Try the questions at your own. Try see if your answers are correct. मैंने 6 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट लास्ट ईयर पेपर से लिए हैं आज के इसमें, कैट 2017 के एंड कैट 2018 के. So let's go to the next thing. अभी थोड़े से हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चंस करते हैं और थोड़े. Try this one. If 2 squares are chosen from randomly, यहाँ पे 2 squares मतलब सुनो, अभी वो स्क्वायर्स की बात नहीं हो रही है. It is only about the 64. Out of 2 squares are chosen on an 8x8 chessboard, मतलब out of the 64 squares. Okay, out of these 64 smaller squares, if randomly मैं 2 square choose करता हूँ तो what is the probability that they have one side in common? वन साइड इन कॉमन मतलब क्या, अगर मैंने ये स्क्वायर चूज किया और ये चूज किया तो इसमें ये साइड जो है ये कॉमन है. इवन मैं इसके नीचे वाला स्क्वायर चूज करता हूँ तो भी वन साइड कॉमन है, इस साइड वाला करता हूँ तो भी वन साइड कॉमन है. राइट, इसके लिए कितने हैं? Any answer, guys? Those who are watching this session right now, I want you to drop in the comment section if you have any answer. See if you can manage. Really important and tricky question, you can say, not that easy. Most of the student make one mistake. They simply do 64 है, एक के बाजू में 4 दिख रहे हैं तो सीधे सीधे 64 into 4 कर देता हूँ. It's not like that, because the problem is, guys, ये तो सेंटर के बाजू में अगर देखोगे तो ये एडजसेंट है, साइड्स कॉमन है, राइट. बट द प्रॉब्लम इज अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूँ तो इसके बाजू में तो 4 नहीं है, इसके बाजू में सिर्फ 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है. अगर मैं किसी और डिफरेंट स्क्वायर की बात करता हूँ, कॉर्नर स्क्वायर की बात करते तो इसके बाजू में सिर्फ 2 है. तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ये मैन्युअली करना पड़ेगा.
Can any answer, guys? Any answer, anybody? Can you tell me the total ways? टोटल वेज कितने होंगे? देर आर 64 स्क्वायर्स एंड मैं रैंडमली कोई भी 2 स्क्वायर्स पिक कर रहा हूं, तो मेरे पास कितने चॉइसेस हैं? 64C2 टोटल। फेवरेबल हम निकालते हैं बाद में, पहले तो टोटल निकालते हैं। 64 इंटू 63 अपॉन 2 इंटू 1, दिस हैज टू बी 32 इंटू 63। 63 का 10 टाइम्स होता है 630, तो 30 टाइम्स कितना होगा? सॉरी 189 प्लस 126, this will be 2016 total ways. Now how to get the favorable ways, favorable outcomes? Anyone, guys? Any answer? Favorable outcomes कितने होंगे यहाँ पे? How many favorable outcomes? Now let's understand one thing, really important thing you need to understand. देखो मैंने 3 चीजें तुम्हें सिखाई यहाँ पे। ये जो कॉर्नर क्यूब्स होंगे ना, कॉर्नर स्क्वायर्स होंगे ना, सॉरी, ये सिर्फ 2 स्क्वायर के एडजेसेंट साइड में, 2 स्क्वायर के साथ उनका साइड कॉमन आता है, राइट है? तो आई जस्ट टेक दिस 4, तो कितने हो जाएंगे? 4 स्क्वायर्स, और हर एक स्क्वायर के एडजेसेंट कितने हैं? 2, तो ये हो गए 8, राइट? आफ्टर दैट ये जो बीच में आ रहा है दिस ऑन एज, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये कितने स्क्वायर्स होंगे जिनके एडजेसेंट 3 होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इट्स डेफिनेटली 6 6 6, इधर से 6 है जो एज पे आ रहा है, तो ये है 24 स्क्वायर्स जिनके एडजेसेंट 3 आ जाते हैं, 3 स्क्वायर्स है जिनके बाजू में, जिनके साथ उनका साइड कॉमन है। तो कैन आई से इट इज 24 इंटू 3 मस्ट बी 24 3s are 8। आफ्टर दैट देखो अभी कितने स्क्वायर्स बचे हैं? ये 24 हुए, ये 24 हुए, तो बच्चे कितने? 36 स्क्वायर। टोटल 64 थे, और you can say this will be a 6x6 structure। ये जो सेंटर पे आते हैं इनके बाजू में 4 हैं, देखो हर एक स्क्वायर के बाजू में 4 स्क्वायर्स हैं, तो 36 इंटू 4, दिस हैज टू बी 144, so the final answer will be 92। 4 into 2 or 24 into, sorry it's not 48, 24 into 370, my mistake। so let's do the calculation part correctly। 80 हो गए यहाँ पे, 80 और 140 220, right? So the probability of an event is favorable outcomes 224 divided by 20। I'm not going to reduce it, okay, you can reduce it at your own। The main important thing is how to get this calculation,
दैट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट। तो अपने पास आंसर ऑप्शन नहीं है और मैंने आंसर ऑप्शन रखे नहीं है इसके, इट्स नॉट लाइक ये कैट में आए हुए नहीं है, बट रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसलिए मैं इंक्लूड, काउंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ट्राई दिस वन ना। अगर तुम्हें पहला क्वेश्चन समझ में आया तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इफ टू स्क्वायर्स आर चोजन फ्रॉम 64 squares on the chessboard, what is the probability that they have one vertex common? Now total ways will be 64 c2, that remains same, 64 into 63 divided by 2 into 1 comes out to be 2016, अभी हमने कैलकुलेशन किया था। Now let's talk about the corner square. कॉर्नर स्क्वायर के बाजू में सिर्फ एक है, का वर्टेक्स उसके साथ कॉमन है। देखो ये दोनों जो स्क्वायर है इनके वर्टेक्स कॉमन, राइट। तो कॉर्नर स्क्वायर जो है उनके साथ एक एक मिलेंगे, तो 4 into 1 फेवरेबल आउटकम्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, 4 into 1 प्लस एज पे जो है इसके साथ 1 2, तो ऐसे एज पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और हर एज पे 6 6 है, 6 6 6 6 कितने हुए 24 into 2 प्लस अब बीच में बच जाते हैं 36, 36 जो है उसके बीच साथ में 1 2 मैक्सिमम 4 ही कॉमन हो सकते हैं। तो 36 जिनके वर्टेक्स कॉमन है, तो 4 प्लस 48 प्लस 140 48 plus 148 plus 148, so the required probability 196 divided by, okay, let's not get into that calculation. The most important part to understand was, hopefully all of you understood up till now. You can drop in the comment, guys, those who are watching live. In case of any query, you can ask me right now. So let's move to the next question. Again an important question. यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें प्रॉपरली पॉसिबिलिटीज लेने पड़ेंगे, देन ओनली इट इज पॉसिबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, will be possible to solve this question. Do it carefully, all of you. I want you to try it first.
ओके, सो आई जस्ट brief you the few things. देखो पहले तो 1-5 से स्टार्ट होने वाले पहले दो डिजिट या तो 1-5 है या तो नाउ द नेक्स्ट 4 डिजिट में से द नंबर इज इवन, सो डेफिनेटली ये लास्ट नंबर इवन होना चाहिए. द अदर पॉसिबिलिटी इज 2 6. नंबर जो है वो इवन होना चाहिए. एंड द रिपीटेशन इज डेफिनेटली, रिपीटेशन के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, दैट मीन्स इट इज अलाउड. Okay, so number is even and 6 appears twice. अगर 6 दो बार आ रहा है तो एक केस लेते हैं. पहले तो लास्ट में 6 आएगा या नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है. अगर लास्ट में 6 नहीं आता है और दूसरा कोई नॉन 6 नंबर आता है तो 0 2 4 या 8 में से ही कुछ होना चाहिए. या तो फिर नंबर 1-5 से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड हो रहा है 6 से, ऐसे भी हो सकता है. और इट कैन बी 0 2 4 इससे एंड हो रहा है. तो हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल लाइक दिस. अगर यहाँ पे तुम 4 चॉइस देते हो तो फिर अब ये तो 1 और 5 फिक्स हो गए. यहाँ पे 2 डिजिट 6 आएंगे. अब ये 2 डिजिट 6 कितने वेज में आ सकते हैं. देखो 3 जगह पे अगर तुम्हें 6 लाना है, 3 जगह पे 6 चाहिए, तो 3 में से 2 जगह पे 6 चाहिए, तो पहले 2 या तो लास्ट के 2 या तो पहला और लास्ट का, ऐसे 3 चॉइस तो तुम्हारे पास 6 लाने के लिए रहेंगे. राइट है. देन जो बचा हुआ जो भी रहेगा, या तो मिडल बचेगा या तो लास्ट बचेगा या तो फर्स्ट बचेगा, वट एवर दैट इज, उसके लिए तुम्हारे पास कितने चॉइस होंगे. दैट कैनॉट बी 6 बिकॉज 6 जस्ट कम्स ट्वाइस. 6 कम्स ट्वाइस मतलब वापस से वहां पे 6 नहीं आ सकता है. तो दैट्स वाई वहां पे 10 चॉइस नहीं लेने हैं. दैट्स द कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स डू. तो 9 4 36, 36 into 3, it has to be 108. ये हमें यहाँ पे क्लियर हो जाता है. 108 आना चाहिए. एंड दूसरा ऑप्शन, अगर लास्ट में 6 है तो इसमें से एक ही 6 है, तो ये 6 है या तो ये 6 है. तो लास्ट का 6 है और पहले 2 एम्प्टी. राइट है. देन अगर ये 6 है तो बचे हुए नंबर्स के लिए अपने पास कितने, ये तो 3 चॉइसेस, इसके लिए 6 के लिए 3 चॉइस है. देन वो नंबर चूज करने के लिए तुम्हारे पास 9 into 9 वो रिपीट हो सकता है, बट वो 6 तो नहीं आ सकता है वापस. सो 9 9 81, 81 into 3, it has to be 240. right. Then we can go for 26. okay, तो 1 5 और 2 6 है. 1 5 इन सीक्वेंस एंड 2 6 इन सीक्वेंस. ये कॉमन नहीं होना चाहिए, तो 1 5 और 2 6. okay. देन नेक्स्ट थिंग, अगर ये 0 2 4 या 8 में से कुछ हो सकता है, सो वी डू हैव 4 चॉइस फॉर दैट. देन बचे हुए जगह पे एक 6 आने वाला है, तो 6 कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे या तो यहाँ पे. सो देयर आर 3 चॉइस. लास्ट के लिए 4 चॉइस. फिर एक 6 आ गया, फिर दूसरा नहीं आना चाहिए, दूसरा कोई भी डिजिट आना चाहिए. 9 into 9. So if we do this calculation, this will be quite big calculation here. 3 4s are 12. 81 into 12. If we do is 12 ones are 12. Carry 1. 12 8s are 96 plus 1 97. So it is 972. And the other option, we can have 2 6 at the start, and the number ends with 6. Number ends with 6 means we do have only one choice, and after that I can get the other digit can be anything out of the 9. 9 into 9 into 9. Why 9? Because 6 तो 2 बार आने वाला है, तो वापस 6 नहीं आना चाहिए. Repetition is allowed, but 6 comes exactly 2 times.
Okay, so this has to be 729. So final answer, if we add this, hopefully all of you understood this, guys. In case of any query related to this question, quickly drop in the comment section if you have any query. Okay, so final answer must be 108 plus 243 plus 972 plus 729. It must be 9 plus 3, 12 plus 2, 14 plus 8, it's 22. Carry 2. 8 plus 7, 15. Carry 1. 10 plus 20. It has to be 205. Hope so there is no doubt in this question. Okay, we do have one more question. How many 4-digit odd number can be formed such that every 3 in the number is followed by a 6? तो अगर नंबर में 3 आता है तो उसके बाद का नंबर 6 होना चाहिए. That is the condition. That's the only condition we have. Think about it. Really important. थोड़ा सा comprehension यहाँ पे बहुत important है. Question उतना tough नहीं है, but तुम misinterpret करोगे तो फिर गलत होने के चांस है. So interpret it correctly. See if you can solve. So how many 4-digit numbers, a 4-digit odd number can be formed such that every 3 in the number is followed by a 6? 4-digit odd number होना चाहिए और 3 के बाद 6 आना चाहिए. तो 4-digit odd number अगर तुम्हें चाहिए तो डेफिनेटली लास्ट डिजिट तो odd होना चाहिए. अब 6 तो odd है नहीं, तो यहाँ पे 3 लिख के इधर 6, ये तो नहीं हो सकता. तो this digit cannot be 3, even this digit cannot be 3. तो एक ऑप्शन है कि तुम यहाँ पे 3 लिख सकते हो, यहाँ पे 6 लिख दो, या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है तुम फर्स्ट प्लेस पे, ये तो ऑड चाहिए अपने को, तो 3, ये क्लियर हो गया. लास्ट के 2 तो 3 नहीं हो सकते हैं, बस 3 के बाद 6 आना चाहिए. तो 3 या तो सेकंड नंबर पे आएगा या तो फर्स्ट नंबर पे. अगर फर्स्ट प्लेस पे 3 आया तो यहाँ पे 6 ही होगा, दैट इज श्योर. ओके, तो 3 6 3 6 ये होना चाहिए. दैट्स इट. देन रिमेनिंग डिजिट्स क्या हो सकते हैं? ये नंबर ऑड होना चाहिए. रिपीटेशन के बारे में कुछ लिखा नहीं है. ओके, रिपीटेशन के बारे में कुछ लिखा नहीं है. दैट सिंपली मीन्स अभी यहाँ पे क्या नहीं आ सकता, डेफिनेटली ये ऑड होना चाहिए, लेकिन 3 तो नहीं हो सकता है. तो तुम्हारे पास कितने चॉइस है? 1 5 7 और 9. क्योंकि 3 लोगे तो उसके बाद में 6 होना चाहिए. ऐसे लास्ट का डिजिट तो 3 रह ही नहीं सकता है फिर. तो 1 5 7 9 ये ऑप्शन है तुम्हारे पास लास्ट डिजिट के लिए. सो वी डू हैव 4 चॉइस फॉर दिस डिजिट, एंड ये तो फिक्स है 1 चॉइस 1 चॉइस. ये 3 6 होना चाहिए. और यहाँ पे 3 मतलब 1 चॉइस, ये इट इज 1 चॉइस. और यहाँ पे लास्ट डिजिट के लिए मेरे पास कितने चॉइस रहेंगे? यहाँ पे 3 6 होगा, या तो यहाँ पे 3 और तो 1 चॉइस 1 चॉइस, यहाँ पे 4. It has to be 3. We do have 1 choice. It has to be 6. We do have 1 choice, and the last place we do have 4. Any answer, guys? Really interesting. ये इतना ही नहीं है, एक और चीज है यहाँ पे. सुनो, अभी अगर यहाँ पे रिपीटेशन का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे, तो फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0 एंड इट कैन नॉट बी 3. तो हाउ मेनी चॉइस डू वी हैव? वी डू हैव 9 चॉइस. 3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके बाद 6 तो है नहीं फिर.
and यहाँ पे this number cannot be 3, can be anything other than 3, so we do have 9 choice. तो 9 4 सा कितना हो रहा है 36, और यहाँ पे भी हो रहा है 36 प्लस 36. एंड एक और चीज हो सकता है कि नंबर में 3 ही नहीं आया है, देयर इज नो 3, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है. अगर 3 है ही नहीं कहीं पे भी तो चलेगा ना. तो लास्ट डिजिट कैन बी 1 5 7 9, that is 4 choice. First digit cannot be 0 and it cannot be 3, so we do have 8 choice. This digit cannot be 3, it can be anything other than 3. So this calculation will be 8 4 the 32 1. I'll do the cross multiply with 2 to the 60 90. plus 1 592. Plus 72. Just a minute, let me check. This is not 9, 8. My mistake. This will be 8 4s of 32 plus 36. So final answer will be 32 plus 36 plus 2592. Has to be 68 plus this one 2660. Final answer will okay guys, so that's it for the day. Those who are willing to go for the plus subscription, do not forget to use this code SHAM1 to avail 10% of discount. And do share with your friends and like and comment, and do not forget to press the bell icon so that you'll be notified about all the live session that is going on here. And you can also join us on Telegram. CAT4MBA is our Telegram channel where you'll be getting the PDF notes for each and every session that we conduct here. That's it for the day guys. Good night. Hopefully all of you enjoyed